Today we discuss the Holder's inequality in LP space. It is a very important inequality from the point of view of the usability in LP space and also from the point of view of the examination. Statement of this theorem is if F belongs to LP space AB and G belongs to LQ space AB, where LP and LQ are conjugate spaces, LP and LQ are conjugate spaces, then prove FG belongs to LAB and norm of FG is less than or equal to norm of FP into norm of GQ. That should be. That is the statement of Holder's equality. Okay. Also here, P is always greater than 1. This should be. Now we start the proof of this theorem. करते हैं इसका proof. Here F belongs to LPAB and G belongs to LQAB. ये हमें दिया गया है और हम प्रूफ करना चाहते हैं these two things that FG belongs to LAB and FG का norm is less than or equal to norm of FP into norm of GQ. We wish to prove number 1, FG belongs to LAB and second, norm of FG is less than or equal to norm of FP, norm of GQ. That should be. Here P and Q are conjugate. क्यों? चूंकि LP and LQ कैसे हैं? conjugate species हैं. That means P and Q are the conjugate numbers. So 1 upon P plus 1 upon Q is equal to 1, and recall it as equation number 1. Now हम एक रियल नंबर अल्फा इसमें मानते हैं. Now consider the real number alpha which is between 0 and 1, means 0 less than alpha less than 1, and consider psi x एक फंक्शन हमने sin x कंसीडर किया जो कि किसके इक्वल है? x की पावर अल्फा माइनस अल्फा x. Then this function is always maximum at 1, which can be, आप देख सकते हैं मैक्सिमा मिनिमा की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए कि psi x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 पर होगी. Then psi x is maximum on 1. आप चाहें तो अलग से करके दिखा सकते हैं. Here psi dash x, differentiation of x, psi x with respect to x, this is alpha x की पावर अल्फा माइनस 1 माइनस अल्फा psi डबल डैश x
कितना, दैट इज अल्फा माइनस 1 x की पावर अल्फा माइनस 2, दैट शुड बी फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा sin dash x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो जाता है कि अल्फा x की पावर अल्फा माइनस 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, राइट। दैट शुड बी अल्फा x की पावर अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा टू अल्फा कैंसल, दिस इज 1, क्यों, बिकॉज अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0, दिस शुड बी, that means x की पावर अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 1, 1 means x की पावर 0, तो अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, so अल्फा इज इक्वल टू 1। also psi double dash 1, because alpha is between 0 to 1, we consider that this, तो अल्फा माइनस 1, this is a negative quantity because alpha is less than 1 but also positive, positive, negative, negative, and 1 की power something is 1, तो psi double dash x is negative, also psi double dash 1 is negative, less than 0, that means psi x is a real function which has maximum value on 1, okay, this should be, इसका मतलब ये हुआ कि इस इंटरवल में a to b इंटरवल में जिसके ऊपर की x बिलोंग करता है, हमेशा psi x लेस देन और इक्वल टू कितना, psi 1, and psi 1 is equal to psi x means this should be x की पावर अल्फा माइनस अल्फा x लेस देन और इक्वल टू psi 1, psi 1 means 1 की पावर अल्फा means 1 minus alpha into 1 means 1, that should put, recall it and second, put x is equal to a upon b in second, that should be, we have, क्या गेट होता है, हमें गेट होता है a अपॉन b की पावर अल्फा माइनस अल्फा इंटू a अपॉन b is less than or equal to 1 minus alpha, this should be, and it can be written as a alpha, b की पावर अल्फा ऊपर जाएगी तो b की पावर माइनस अल्फा, अल्फा a अपॉन b लेस देन और इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, b को एलसीएम लेते हुए सिंपलीफाई करेंगे तो we will get a अल्फा b की पावर माइनस अल्फा इंटू 1 तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा a लेस देन और इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, दिस इज माइनस, सॉरी, 1 माइनस अल्फा इंटू b, here it is considered that a and b are positive, here ये assume किया गया है कि a is positive and b is also positive, इसका मतलब ये हुआ कि a की पावर अल्फा इंटू b की पावर 1 माइनस अल्फा इज लेस देन और इक्वल टू अल्फा a प्लस 1 माइनस अल्फा b, रिकॉर्ड दिस इज थर्ड, it should be, okay, now let, हमने माना अल्फा किसके इक्वल है, 1 अपॉन b के, थोड़ी देर के लिए मानिए, और चूंकि अल्फा 0 1 के बीच में है, अल्फा इज बिटवीन 0 टू 1, तो p हमेशा 1 से बड़ा होगा, जो कि होना भी चाहिए, ओके, देन p इज ग्रेटर देन 1, क्यों, चूंकि अल्फा इज बिटवीन 0 टू 1, दैट शुड बी, आल्सो देन बाय फर्स्ट, also then by first 1 upon p means alpha 1 upon q is equal to 1,
या 1/q is equal to 1 minus alpha. That should be. And so third can be written as राइट करिए जरा, a की पावर अल्फा मीन्स 1/p, b की पावर 1 माइनस अल्फा मीन्स 1/q is less than or equal to alpha means 1/p, b 1 minus alpha means 1/q. This should be b/q. That should be. Recall it as fourth. Now inequality is always hold या trivial if f and g or both are 0. Here proving inequality is trivial if f and g are 0 or both 0. So consider that mod of f की power p a to b, this is norm of fp की power p and norm of gp means a to b gq. Mod of g की power q are strictly increasing. Are strictly increasing. Are strictly increasing. That should be. Now assume that capital Fx is equal to Fx upon norm of Fp and capital Gx is equal to Gx upon norm of Gq. Also let a की पावर 1 upon p is equal to mod of Fx and b की पावर 1 upon q is equal to mod of Gx. That should be. Then by fourth, या put in fourth, then by fourth a to the power 1 upon p means mod of fx, b की पावर 1 upon q means mod of gx less than or equal to 1 upon p. A means a की पावर 1 upon p mod of fx, तो a means mod of fx की पावर p. That is same way 1 upon q. B means gx mod की पावर q. It should be. Or this can be written as this is capital Fx gx का mod less than or equal to 1 upon p mod of fx की पावर p. What is mod of fx की पावर p?
mod of f की पावर p अपॉन नॉर्म ऑफ f की पावर p की पावर p प्लस 1 अपॉन q mod of gx means mod of g की पावर p q sorry upon norm of g q की पावर p it should be on integrating a to b mod of capital fx gx dx a to b 1 upon p बाहर mod of f की पावर p और norm of fp की पावर p from here norm of fp की पावर p this is a to b mod of fp mod of fp dx 1 upon q similar way में mod of g की पावर q upon norm of g की पावर q is this is a to b mod of g की पावर q dx basically these are the constant terms तो cancel this to this is this to this and this to this तो 1 upon p plus 1 upon q which is equal to 1 that should be okay. Now fx means what is fx? Fx is this a to b fx gx means gx upon mod upon norm of fp is a positive quantity, norm of gq is also a positive quantity, so no meaning to put the mod on these quantities. This is norm of fp, norm of gq, this is less than or equal to 1, so a to b fg का mod या fx gx का mod is less than or equal to norm of fp, norm of gq. And what is this? According to definition of mod, this is norm of f is less than or equal to norm of fp, norm of gq. This should be, recall it as 5, and this is the second proof of the inequality, which is second proof of the inequality. एक तरीके से हमें इस इनइक्वालिटी का ये सेकंड प्रूफ या सेकंड स्टेटमेंट जो प्रूफ में करना है गेट हुआ, which is second condition of theorem. Also for first f belong to LP on interval AB, G belong to LQ on interval AB. Number 1, f and g are measurable. Sure, fg is measurable. रीजन इसका ये है कि अगर fg दो मेजरेबल सेट हैं किसी भी इंटरवल के ऊपर तो उनका प्रोडक्ट भी मेजरेबल होता है ऑलवेज. b f belong to LP, also f belong to LP, g belong to LQ, sure mod of f की पावर p का इंटीग्रेशन a to b is less than infinity, also mod of g की पावर q का इंटीग्रेशन a to b is less than infinity. इसकी पावर 1 upon p करें और इसकी पावर 1 upon q करें तो वो भी infinity से कम होगा. And what is this? Norm of fp less than infinity and norm of gq is also less than infinity. Then by fifth, this is less than infinity, this is less than infinity, so norm of fg is less than infinity. Then by fifth, norm of fg is less than infinity. या कहिए norm of fg means mod of fg on interval a to b is less than infinity, i.e. mod of fg
is integrable on interval a to b should fg belongs to LAB, which is first condition of Holder's inequality. Which is first condition of Holder's inequality. This is the complete proof of the Holder's inequality. This is the very important theorem from the point of view of the empty spaces. नेक्स्ट पीरियड में मिन्कॉस्की इनइक्वालिटी का प्रूफ और उसके यूज के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके.